आवाज आ रहा है ना बराबर विशाखा? आवाज आ रहा है ना बराबर? You are live now. Okay. Namaste. Hello. Radhika, am I audible? Yes. Okay. नमस्ते, मेरा नाम विशाखा है एंड आज हम यहाँ पे सब एक मैं और राधिका इकट्ठा हुए हैं। पहले तो मैं सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगी मानस साइकोलॉजिकल हेल्थ सेंटर को, बिकॉज हमने 20 इयर्स कंप्लीट किए हैं एंड उसी के सेलिब्रेशन के तौर हमने एक प्रोग्राम आयोजित किया है जिसमें हम मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर्स और डिफरेंट डिफरेंट थेरेपीज के बारे में बात करने वाले हैं आज। So I would like to welcome everyone, whoever is seeing us live today. We'll just wait for 2 to 3 minutes before we start the live program. Let others join. So Radhika, as we are doing a live program, yes. Let's wait for 2 to 3 minutes. Yes. Also, I would like to add, as Vishakha is saying and starting with the process, those who are live and those who are watching this, please try to get the paper, any blank paper, white in color, or any colors of your choice, maybe 3 to 4 colors, which are either crayons or easy to manageable or something like that. So that when we start with the session flow or when we start with the activity, आपको आसानी से हमारे साथ एक्टिविटी करने का मौका मिलेगा और आप वो कर सकोगे। फॉर द कंप्लीशन ऑफ द आर्ट एक्टिविटी, अगर आपको आपके आर्ट एक्टिविटी के फोटोज निकाल के हमारे फेसबुक पेज पे भेजना चाहते हो आप, तो वो भी कर सकते हैं। हम वो जरूर देखेंगे, हम दोनों भी वो जरूर देखेंगे। So as Vishakha has introduced herself, I would like to introduce myself. मेरा नाम राधिका है। I am a counseling psychologist and arts-based therapy practitioner working in Manas. जैसे हमें पता है, Manas has completed 20 years and entering into the adult year of its own. So on the embarking journey, we congratulate all of the staff and sir, and we take this opportunity to explore arts-based therapy and to just give it to all of you, to whatever we have and we know about arts-based therapy. So I guess we have 6 to 7 people right now. Great. So we can start with our session. Yeah. So as Radhika ne kaha ki, we will be exploring arts-based therapy today. The session is about arts-based therapy. So when we talk about arts-based therapy, एज यू नो कि हमने बहुत सारे डिफरेंट थेरेपीज अब तक एक्सप्लोर किए हैं। उसमें से एक है आर्ट्स बेस्ड थेरेपी। लास्ट थेरेपी जो हमने एक्सप्लोर किया था वो है रैशनल इमोटिव बिहेवियरल थेरेपी। आज हम आर्ट्स बेस्ड थेरेपी एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली आर्ट्स बेस्ड थेरेपी इज अ थेरेपी जहाँ पे हम आर्टिस्टिक मीडियम यूज करते हैं। सो जब हम आर्टिस्टिक मीडियम के बारे में बात कर रहे हैं तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आर्ट्स बेस्ड थेरेपी वही लोग कर सकते हैं जो आर्टिस्ट हो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आर्ट सुन के ही लोग ये समझने लग जाते हैं। लाइक आई एम ऑल्सो अ काउंसलर, सो लोगों को ऐसा लगता है कि ओके उन्हें कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा, उन्हें कुछ निकालना पड़ेगा, उन्हें कलर करना पड़ेगा एंड इट हैज टू बी परफेक्ट। सो ऐसा यूजुअली नहीं होता है। हम डिफरेंट आर्टिस्टिक मीडियम यूज करते हैं, जैसे कि कलर्स हो गए, पेंट्स हो गए, मूवमेंट, डांस फॉर्म हो गया, म्यूजिक, रिदम, ड्रामा, स्टोरीज। सो हम ऐसे कॉम्बिनेशन यूज करके हम सेशन कंडक्ट करते हैं। तो बचपन में जैसे स्कूल टाइम पे आपने सुना होगा कि मम्मी कहती होगी कि आर्ट ड्रॉ करना है, तो काफी लोगों को ये माइंड में होता है कि आई एम नॉट गुड इन आर्ट। इट्स ओके इवन इफ यू आर नॉट गुड इन आर्ट। इट्स ओके अगर आपको डांस करना नहीं आता, आपको मूव करना नहीं आता है, अगर आप सिर्फ एक फिंगर्स हिला सकते हैं तो भी वो एक आर्ट बेस्ड थेरेपी का फॉर्म होता है। सो
दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर आज, की आर्ट्स बेस्ड थेरेपी में एक्चुअली होता क्या है। एक्सप्लोर करने से पहले, व्हेन टॉकिंग अबाउट आर्ट्स बेस्ड थेरेपी, इट हेल्प्स क्लाइंट टू एक्सप्लोर देमसेल्फ, वो खुद को बहुत ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सकते हैं। जब हम ऐसे कोई मीडियम से एक्सप्लोर कर रहे हैं जिसमें हमें बात करने की ज्यादा जरूरत नहीं है, बट हम मूव कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम खुद को एक प्लेस में डालते हैं जहां हम अगर हमारे कुछ सिचुएशंस होते हैं जिसे हम कन्फ्रंट करना बहुत डिफिकल्ट होता है, तो आर्ट्स बेस्ड थेरेपी उसे बहुत इजी बना देता है। अगर हम कोई ट्रॉमा बेस्ड सिचुएशन हो गया, और कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन होता है जो हम एक्सेप्ट कर नहीं पाते, जिसके बारे में बात करने से बहुत ज्यादा हमें तकलीफ होती है, तो ये मीडियम होता है जिसे हम बहुत आसान बना सकते हैं, और इसी से हम खुद को भी एक्सप्लोर करते हैं, हमारे एक्सप्रेशन को भी बहुत अच्छी से एक्सप्लोर कर पाते हैं, रिलेशनशिप बिल्ड करने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, लोगों से कम्युनिकेट करने में इजी हो जाता है, और ये अपने आप ही एक हीलिंग प्रोग्राम में कन्वर्ट हो जाता है कि आप ऑटोमेटिकली इससे हील होने लगते हैं। सो इसी तरह का कुछ आज हम सेशन में भी अप्लाई करेंगे प्रैक्टिकली, एंड लेट्स सी हाउ यू फाइंड आर्ट्स बेस्ड थेरेपी। ओवर टू यू राधिका। Yeah, so the arts-based therapy as a term was coined by World Center for Creative Learning Foundation based in Pune. So आपने सुना होगा एक्सप्रेसिव आर्ट थेरेपी होता है, आर्ट थेरेपी होता है, या आर्ट थेरेपी के डिफरेंट डिफरेंट मोडालिटीज से बेस्ड होता है, डांस मूवमेंट थेरेपी होता है. So how arts-based therapy is different from all these platforms is basically based on theoretical model, which is mainly for mind training, because इट्स नॉट दैट जैसे विशाखा ने बोला कि एक तो यहाँ पे हम आर्टिस्ट है या नहीं ये मैटर नहीं करता फर्स्ट ऑफ ऑल. दूसरी जरूरी बात ये है कि सिर्फ एक्टिविटीज से नहीं होता, ये माइंड ट्रेनिंग की बात होती है जहाँ पे हम मन को एक ऐसे फॉर्मेट में ढालने की कोशिश कर रहे हैं जो काफी फ्लेक्सिबल हो, जो रेजिलियंट हो, जो किसी भी मुश्किल सिचुएशन का सामना करने के लिए तैयार हो, और उसमें जो कुछ भी जरूरी चीजें लगती हैं टू फाइट विद एनी सिचुएशन, वो सारी चीजें हमारे पास हो. ये मोटिव और ये गोल रख के हम ये थेरेपी का उपयोग ज्यादा से ज्यादा करते हैं, जहाँ पे माइंड ट्रेनिंग बहुत जरूरी होता है. So I remember Vishakha, if you also might be into that phase again while we are discussing today, कि जब हम ट्रेन हो रहे थे या जब हम ट्रेनिंग के अंडर थे तो हमें क्या क्या एक्सप्लोर करना पड़ा, हम क्या क्या कर रहे थे. सो माइंड ट्रेनिंग हम भी वो लेक्चर सुने हैं, वो थ्योरी पढ़ने की कोशिश की है बोलूंगी, क्योंकि हम अभी तक उसमें बेड़ा पार नहीं हो पा रहे हैं. हम फिर भी पढ़ रहे हैं, हम सीख रहे हैं, पढ़ते झगड़ते सीख रहे हैं. तो माइंड ट्रेनिंग इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट व्हेन इट कम्स टू थियोरेटिकल बैकग्राउंड ऑफ आर्ट्स बेस्ड थेरेपी. ये थियोरेटिकल बैकग्राउंड हमें आर्ट्स बेस्ड थेरेपी के मॉड्यूल को और पूरे थेरेप्यूटिक प्रोसेस को एक ऊंचाई पे लेके जाता है, जहाँ पे ये सिर्फ म्यूजिक, मूवमेंट, ड्रामा या फिर कलर्स के बारे में नहीं होता. ये हमारे माइंड को ट्रेन और फ्लेक्सिबल करने की जर्नी हो जाती है. So I think let's focus on our next format, Vishakha. ऐसे होता है कि हम क्यों करते हैं ये, तो आपका क्या थॉट है कि why you felt you need to do arts based therapy certification course first of all? So I felt like as I said that I'm also clinical psychology, and कहीं ना कहीं वो फीलिंग आता है कि जब हम थेरेपी करते होते हैं कि हमें क्लाइंट को और डीपर लेके जाना जरूरी होता है, जहाँ वो खुद को सेल्फ कनेक्ट कर सके, वो अवेयर हो सके. और कई बार कुछ थेरेपी में ऐसा फील होता है कि वो नहीं हो पाता है, एंड इवन क्लाइंट भी कभी कभी चाहता है दैट दे नीड समथिंग मोर देन व्हाट दे आर गेटिंग. सो दैट्स व्हेन तब मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, आर्ट्स बेस्ड थेरेपी इज वेरी काइंड ऑफ अ थेरेपी जहाँ पे दे कैन एक्सप्लोर, दे गेट टू नो देमसेल्फ. लाइक जब मैंने आर्ट्स बेस्ड थेरेपी के बारे में सुना था, मुझे आइडिया नहीं था कि वो एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है. फिर मैं ट्रेनिंग में थी
इंटर्नशिप करी थी तभी आई केम अक्रॉस राधिका ओनली, जब मैंने आज बेस थेरेपी के बारे में एक्चुअली प्रैक्टिकली देखा. कोइंसिडेंटली आई वाज थिंकिंग तभी दैट आई शुड गेट समथिंग डन इन आज बेस थेरेपी इटसेल्फ. एंड जब राधिका को प्रैक्टिकली करते हुए देखा तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये कितना इजी है और कितने इजीली लोग उसे कनेक्ट करने लग जाते हैं. एंड दे ऑल्सो इवन रियलाइज कि अंडरलाइन मीनिंग हम खुद एक्सप्लोर करने लगते हैं. हमें सामने वाले को कुछ ज्यादा कहने की जरूरत भी नहीं होती है. तो इट्स मोर ऑफ अ इंट्रोस्पेक्टिंग थेरेपी दैट आई फील. एंड देन हाउ आई स्टार्टेड विथ माय जर्नी, Radhika. So thanks. But I would also like to ask you the same question. Like, how did you started with your journey? Yeah. This is about completing the circle of our journeys and learning. जैसे आपने मेरा नाम लिया है because you saw me conducting an arts based therapy session. I saw your teacher conducting a session, which is Shweta, and she was, and she will be an inspiration for me. क्योंकि मैं जब masters कर रही थी, and I was in second year, and एक ऐसे सेशन अरेंज हुआ था फॉर अल्टरनेटिव थेरेपीज. सो drama therapy, arts based therapy, and dance movement therapy, all three people were together, and they were exploring and facilitating a session for us for 2 days. It was a 2-day workshop. So the moment I saw that with one rhythm, with few bits of the instrument, हम बहुत कुछ कर रहे हैं, हम बहुत कुछ एक दूसरे से बात कर रहे हैं. शायद उसके लिए हमें कॉमन लैंग्वेज आने की जरूरत नहीं है, बट सिर्फ कुछ कलर्स के साथ करने की इच्छा है, या कुछ म्यूजिक को सुनने के बाद डांस करने की इच्छा है, एंड दैट इज इनफ फॉर अस टू एक्सप्रेस. सो वो मुझे बहुत जरूरी लगा कि जहाँ पे एक्सप्रेशन की बात आती है, तो जहाँ पे जसं आपण म्हणतो की बोलणं जिथे खुंटतं तिथे आपली कला जास्त बोलते, कारण त्याला कुठलेही त्याला कुठलीही शब्द मर्यादा नसते, किंवा त्याला कुठलीही बंधनं नसतात. इट इज अ फ्री ऍक्ट विच इज हॅव्हिंग नो राईट ऑर रॉंग आन्सर. कधी कधी असंही होतं की आपल्याला काही लोकांशी बोलताना, रॅपो बिल्डिंग करताना सोपं जातं. So I have seen that in my examples where when I was under training, I was getting trained for that with kids also. So I think main motive for doing this course prior or earlier in the field, just after my master's, was to start something better in terms of collaborating with the other therapies that we have. जैसे कि cognitive behavioral therapy है, person centered approach है, Adlerian therapy है. ये सारे therapies को साथ में लेके जाने वाली कोई थेरेपी है तो आई थिंक आर्ट्स बेस्ड थेरेपी है. इसीलिए मैं भी मोटिवेट होके मैंने वो कोर्स किया था. Yes, yes. As you said, Radhika, actually हर एक थेरेपी यूज करना काफी डिफिकल्ट होता है हर काउंसलर के लिए. तो हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ थेरेपी यूज करना ही पड़ता है. एंड आर्ट्स बेस्ड थेरेपी कहीं ना कहीं इन सारी थेरेपियों को डेफिनेटली कनेक्ट करता है, क्योंकि हम वो थेरेपी ऑटोमेटिकली आर्ट्स बेस्ड थेरेपी के थ्रू प्रैक्टिस कर सकते हैं. एंड जो हम वो थेरेपी टॉक करके यूज करते हैं वो हम थ्रू आर्ट्स यूज करते हैं. सो मूविंग अहेड विद दिस, आई वुड, जैसे कि हमने कहा कि आर्ट्स बेस्ड थेरेपी में ज्यादा करके एक्टिविटीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट लाइक वेरियस मीडियम्स यूज करते हैं हम. तो आज हम चाहते हैं कि मैं और राधिका आपके लिए एक सेशन कंडक्ट करें जहां पे आप एक्सपीरियंस कर पाए कि व्हाट इज आर्ट्स बेस्ड थेरेपी एग्जैक्टली और हाउ डज इट वर्क. सो जैसे राधिका ने स्टार्टिंग में कहा था कि अगर हो सके तो क्विकली जाके पेंसिल, पेपर या बेसिक आर्ट मटेरियल आपके पास जो भी अवेलेबल हो तो आप वो क्विकली लेके आइए. विल वेट फॉर अ मिनट एंड you can give us a thumbs up if you have it with you, like paper, blank paper, ruled paper, normal colors, any format of colors, crayons hai, oil pastels hai, whatever, pens, anything, pen, pencil, sketch pens, anything. Anything. So while we are waiting for them to respond, or if they want to get the material, I would like to mention here कि
जब हम ट्रेनिंग के दौरान जब हम एक्शन रिसर्च करते हैं, जैसे विशाखा और मैंने, हम दोनों ने किया, तो ऐसे कई बार होता है कि हम मटेरियल कुछ साथ में लेके जाते हैं, और जो हमारा ग्रुप होता है या जो हमारे पेशेंट्स होते हैं, जैसे कि विशाखा ने साइकेट्रिक सेटअप पे पेशेंट्स जो होते हैं उनके साथ किया, मैंने स्ट्रीट चिल्ड्रन के साथ ये प्रोजेक्ट किया। तो ऐसे कई बार हुआ होगा विशाखा आपका भी कि आप लेके कुछ एक आए हो, जैसे कि अभी आज मैं विजुअल आर्ट्स एक्सप्लोर करूंगी मेरे ये पेशेंट के साथ या मेरे ये ग्रुप के साथ, लेकिन हमें जाने के बाद पता चलता है कि नो द मतलब जो हमारा ग्रुप है या जो हमारा क्लाइंट है वो किसी और सिचुएशन से आया है, उसको कुछ और चीजों की जरूरत है, और मे नॉट बी मटेरियल वाइज, बट जो हम प्लान करके आए हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं जाने के बाद कि नो दिस इज नॉट फॉर टुडे। सो जस्ट टू ऐड कि ये कभी आपके साथ हुआ है आपके ट्रेनिंग के दौरान, या आप बिकॉज आपने ये साइकेट्रिक सेटअप पे किया है या पेशेंट्स के साथ किया है, तो शायद मतलब ये कैसे आपने एक्सप्लोर किया था, ऐसे कभी हुआ था क्या? यस डेफिनेटली राधिका, ऐसे हुआ है, और एक बार नहीं, काफी बार ऐसे होता है। तो कई बार अगर मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि अगर मेरा क्लाइंट, जैसे कि फॉर एन एग्जांपल व्हेन मेरा रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा था, तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं ड्रमिंग लूंगी मेरे क्लाइंट के लिए, बट मेरा क्लाइंट उस टाइम वो जोन में नहीं था कि वो ड्रम सेशंस कर सके या रिदम सेशंस कर सके, बिकॉज ही वाज नॉट फीलिंग दैट कंफर्टेबल। सो आई थॉट कि ही वांटेड टू एक्सप्रेस मोर, ही वांटेड टू बी रिलैक्स्ड ऑन दैट डे। so I thought कि let's do something with colors, and मेरे पास कलर्स में भी रिस्पेक्टेड फ्यू कलर्स थे, लाइक वाटर कलर्स थे, एंड ब्रश नहीं था, water easily available था। so what we did is I had some straws, and like we I had a watercolor straw, so blow painting किया था हमने, and rather than on paper I did it on the table itself, Yeah. so the client can get that, you know, I could see कि जब client को paper दिया था, he was finding it too difficult for, because he was trying to handle it from all the corners कि बाहर नहीं जाना चाहिए, ऐसे नहीं जाना चाहिए। so seeing that I also felt that कि client अभी भी बहुत restricted feel कर रहा है, express करने नहीं हो रहा है। so then I decided like let's go further, and उसको वो पूरा table दिया था, and believe me it was amazing the kind of blow painting he had done. I was mesmerized with that ki okay, this is so fun, and kahin na kahin sirf client hi nahi, even we feel content ki okay, the client is reaching at that point. Yeah, true. I think while you're saying this, I think this can be explored as sky as a limit, no? I mean, if you consider paper is your sky, you may not find it suitable with your thoughts. But if you break the horizon and you go a little more behind that, you can see the entire sky shining with lot of stars. Yes, true. Yeah. So I guess would you like to share something of like this? Yeah, definitely. Because मेरी जर्नी ट्रेनिंग की थोड़ी सी और मुश्किल थी, क्योंकि मैं यहाँ से मुंबई सेंट्रल ट्रैवल करके जाती थी, और कहीं ना कहीं ऐसे था कि मेरा जो ग्रुप था वो ऐसे बहुत एंथुसियास्टिक ग्रुप था, 13 to 14 ईयर्स किड्स, एंड ऑलवेज इनटू एनर्जी, ऑलवेज रनिंग आउट ऑफ टाइम, ऐसे था। तो ऐसे कई बार हुआ है कि वो कुछ किसी लो फेज से घर से आए हैं, या मतलब दे बिकॉज एंड सिंस दे वर बिलोंगिंग टू लो इकोनॉमिक स्ट्रेटा, तो उनके इश्यूज, उनका डिफिकल्टी लेवल बहुत अलग ही लेवल पे था। तो ऐसे कभी कभी होता था कि वो एनर्जी कितना भी हो, यहाँ से मैं 2-3 जेम्बे साथ में लेके जाती थी, and after reaching the point where the school was located, मैं ऐसे देखती थी कि बच्चे बहुत मुरझाए हुए हैं, शायद उन्होंने कुछ खाया भी नहीं होगा, उनको कुछ मिला भी नहीं होगा, तो और वो पढ़ने के भी मूड में नहीं है, मतलब अगर मैं उनको कुछ रीडिंग या ऐसे कुछ बोलूं, तो मेरे काफी टाइम
स्माइली balls and the room का छोटा सा part which is 1/4 of the bigger room, ये मुझे दिया गया था. तो इतना छोटा सा रूम, फिर वो सारे बच्चे उनकी मस्ती और उनका हंसी मजाक, इसमें प्ले वाज माय बेस्ट फ्रेंड दैट टाइम. कुछ भी अवेलेबल है जिसका यूज करके खेलना, या कुछ नहीं है तो खुद के अपीयरेंस को, खुद के लाइक एक्सप्लोर करना, प्लेस एक्सप्लोर करना, ये मेरा दिस factor was my best friend for most of the days. And then towards the end I used to make sure, like I tried making sure that at least they're getting something out of it. तो end story session से, या end कुछ अलग activity करके, या end simply songs and rhythm करके, ऐसे मैंने बहुत try किया है. Nevertheless, seeing them smiling at the end of the day was a relief, definitely. I think people must be ready with the material so far. Hope so. Right? Let's hope so. You can share, as I said in the start of the session, आप जो भी करोगे हमारे साथ आर्ट का यूज करके, whatever पेपर पे जो आप करोगे, वो आप उसके पिक्चर्स लेके फेसबुक के मैसेंजर पे भेज सकते हो मानस पे, so that we see that and we feel happy as well. Yeah. So before we, like, now we are about to start, so like अगर आपके materials आपके पास है तो just keep it with you. And Radhika, could you just tell me, not only Radhika but everyone, whoever is listening to us, ki pick any 3 colors that you could see right now. Okay. In my surrounding, you mean in the room that I'm sitting in? Yeah, in the okay. Surrounding. Any 3 colors that you see? Any 3 colors? I have to say first 3. Yeah, you have to say it. Okay, so first 3 is blue, pink, and orange. Okay, so I could see black, gray, and white. Okay. Okay, and you can see blue, pink, and orange. Orange, yeah. I'll let's make a note of each other's color individually. Please. So that we know which colors that we found out. And people who are watching us, you can write it down in the comment section, the 3 colors that you could see right now. So I think Vishakha, अगर हम colors ले रहे हैं तो क्या होता है ये colors? क्या लगता है आपको? Let's just see, what you have on your platter of colors. I see colors means like अगर हिंदी में convert किया जाए तो रंग, and रंग से तो मुझे गाना याद आता है. So I know one song I used to watch, and then I just know the title of it, not like the whole Please song. Go ahead. Please go ahead. Stage is yours. Yeah, so I know a song है जिसका stanza ऐसे सारा, मेरे रंग में रंगने वाली परी हो या कोई सपनों की रानी, क्या हो तुम एक कहानी हो मेरे ख्यालों का. La. So this Lala is also our babe when we do the yes. Yeah. So apart from singing, रंग बोलते हैं तो क्या आता है? Colors. A rainbow or something, flowers, or anything that attracts. Or even season for that matter, because currently we are fortunately and beautifully exploring the rainy season of Mumbai right now. And it looks green and it looks happier ever after. Yes. So as you are saying, you just introduced the song and you were thinking about रंग बोलते हैं तो music या singing दिमाग में आता है. Yes. Why don't we do one thing? Let's just start with the activity of our coloring. You just explain us what we need to do with the colors, and
maybe I can be a background musician for that and be a I singer would for you all. love if you are a background musician because you sing really nice, Radhika. Yeah, thank you. I just So try. No, this is also happened. This is yeah, also one of the factor happening under training, that your both parts of your brain, left and right hemisphere, goes under training when you do arts based therapy course. yes. So We don't even realize that when it yeah, started. Like I yeah, started drawing after doing my arts-based therapy. true. Same with me. Yes. So now, as Radhika would be singing, so let's do something like now we have a song, we have a color. तो पेपर भी है, कलर्स भी पिक किए हैं. सो इफ पॉसिबल, अगर आपके पास वो 3 कलर है जो आपको एक्चुअली दिखे थे when we asked you to see what is there in surrounding, the colors that you could see in your surrounding. So वो 3 कलर्स अगर आप चूज कर सकते हैं तो वो 3 कलर्स, या फिर उसके बदले कोई और भी 3 कलर्स अगर आप लेना चाहे तो. सो यहाँ पे मेरे पास ब्लैक, मैंने 3 कलर्स लिए हैं मेरे, and I okay. have them with me. Okay. And even I have black, gray, and white. Yes. Yes. So I don't know what I'm going to make, but let's. Yeah. So what are we going to do with these colors? Yeah. So coming to that, what are we going to do with this color is let's make a circle with your Okay. color, any color that you pick. It could be a big circle, it could be a small circle. It could be a lot of circles on one paper also. Yes, it could be a lot of circles in one paper as per your wish. So I'll just show you. I have a paper over here. Yeah. A blank paper. I hope everyone can see that. And so I think by the time you that you are giving, yeah, I am already done with the circle. Is it visible? Yeah, it is visible. It's pretty yes. much visible. Yes. So we're just gonna make a circle. Circle. Yes. Yeah. So should I be a entertainer for the? Yeah. Please. कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बनके दिल खिले, घुल रहे हैं रंग सारे, घुल रही है खुशबुएं, चांदनी झरने घटाएं, गीत बारिश तितलियां हम पे हो गए हैं ये मेहरबान, ऐसी है ये रुत की जिसमें फूल बनके दिल खिले. देखो नदी के किनारे पंछी पुकारे किसी पंछी को, देखो ये जो नदी है मिलने चली है सागर ही को. So by the time Radhika sings, I would want आप सभी लोग ने जो सर्कल बनाया है, राधिका you can keep singing. Yes. Yeah. सुनो प्यार की निराली अगर राधिका जो सिंग करी है या किसी भी चीज से जब आप वो 3 कलर्स देख रहे हैं, if you are able to associate with anything, so let's just explore what comes in your mind when you're listening to a song or when you see those 3 colors. What is the thing that comes into your mind? And let's just start exploring it in that circle. It could be anyhow. You can scribble, you can draw something, whatever you feel like, by using those 3 colors. कैसे किसी को बताए, कैसे ये समझाए क्या प्यार है, इसमें बंधन नहीं है और ना कोई भी
दीवार है, सुनो प्यार की निराली ये दास्तां, कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बन के दिल खिले, घुल रहे हैं रंग सारे, घुल रही है खुशबुएं, चांदनी झरने घटाए, गीत बारिश तितलियां, हम पे हो गए हैं सब मेहरबान, कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बन के दिल खिले, ता 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 ता। देखो नदी के किनारे पंछी पुकारे, किसी पंछी को देखो, ये जो नदी है मिलने चली है सागर ही को, ये प्यार का ही सारा है कारवां, कैसी है ये रुत की जिसमें फूल बन के दिल खिले, घुल रहे हैं रंग सारे, खुल रही है खुशबुएं, चांदनी झरने घटाए, गीत बारिश तितलियां, हम पे हो गए हैं सब मेहरबान. Yes, Vishakha, it is looking amazing, and I am just getting into the drawing. Look at this. This is a spirals and circles of lot many. So nice. This is so pretty. So I just went with the flow, and I enjoyed this. Yeah, that's what something I am doing. I'm just in middle of it. As you kept singing, Radhika, I just kept doing it. Nothing else. I just kept putting colors in, and something is coming up. I don't know what it is going to be. Whatever level that you have reached, अगर हम इसको कुछ नाम देना चाहे तो क्या नाम देंगे? आपने जो किया है उसको. What is the word that you get one after looking at the shedding that you have done? It feels that, it's some kind of ball that has come out, and there's some rays coming out of it, like the black are the rays. Okay. Yeah, and there is something like just a kind of a moist or fog kind of a thing that is coming now. With me, I think there are many pretty flowers coming together in the garden. And it looks like I was just making a garden, and I wanted to put the flowers together. Oh, that's so pretty. And actually it looks like a flower itself. Flower, yeah. Big flower and then the small chotu flowers. Yes. Yeah. So let's give our audience some few more time to complete their drawing or whatever they are making. So if they feel like adding some other color, please feel free to do that. You don't have to restrict yourself for 3 colors. Yeah, definitely. While I'm done with one song, would you want to give me one more song to sing? If I know, I'll definitely be an entertainer to keep the flow of coloring for you. Definitely you can. How about rainy season is going on? It's raining. I could see that it's raining at my place right now. So maybe something about rainy or based on weather. Weather. Okay. Rainy song. What is it that comes to my mind? ऐसे बहुत सारे आते हैं, बट ऐसे अगर कुछ करने जाए तो दिमाग खाली हो जाता है. बट आई थिंक
this rainy season gets with lot many songs that are already there in our mind, and we keep exploring them. We keep Yeah. singing, or we keep, like, if not loudly, we do keep singing about very many various songs in general. Yes, yes, yes. Yeah, even in mind also there is something humming going on when we consider rains. Yeah, uh, true. Yeah, जी like when करता we है are पंख लगा के उड़ जाऊं मैं, नील गगन पे बादल में छुप जाऊं मैं, बहगा मिलाया सावन, दामन से भर जाए दामन, रिमझिम खुशियों की बरसे हम पे बरखा, चंचल हवाएं बोली, सजने दे तेरी डोली, डोली फिर डोले जैसे डोले चंदा, जी करता है पंख लगा के उड़ जाऊं मैं, नील गगन को बादल तुझ में छुप जाऊं मैं, जी करता है पंख लगा के उड़ जाऊं मैं, बरखा पवन ये बूंदे सबने उड़ा दी नींदे, जागी आंखों में फिर जागा सपना, मनवा मेरा भी डोले, हौले हौले ये बोले, बेगानी दुनिया में तू ही अपना, जी करता है पंख लगा के उड़ जाऊं मैं, नील गगन को बादल तुझ में छुप जाऊं मैं. I think as I'm singing the song, थोड़ा I बहुत am कुछ, adding the colors as you're singing this. yeah, and also I'm able to understand थोड़ा बहुत कुछ म्यूजिक समझ में आता है. This song is based in on राग मल्हार, which is of rainy season ragas. तो जब भी हम बारिश का मौसम आता है और जब हमें अच्छा महसूस होता है because of the weather change, and generally this raga is based on मल्हार, like based on the Okay. rainy season. Yeah, Okay, okay. yeah. So I'm So ऐसे almost about to done, done. Yeah, done. yeah, yeah. Yeah. So I'm just ending and winding up with the rest of the flowers. Yeah. And in my flowers, one basic remaining part was the leaves. So I just tried to keep it very simple by adding the green color into it. Yeah. I was just adding a green color right now. Yeah, it looks now for me, Visakha. It looks like Earth, Yeah, which is actually, receiving the rays and happiness. yes, yes. Somehow it lead to that. Like as you Yeah, kept singing, and as you singing. kept Yeah. I felt like some other colors need to be added. Yes, yes, yes. And seeing it as a circle, I felt like it's a earth, and it has sun, some Yeah. drops. So as you are exploring Earth, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा मेघा, बरसो रे मेघा बरसा कोसा कोसा है बारिश बारिश का का बोसा कोसा है, है कोसा है बारिश का बोसा है. कोसा है. As I'm reminding myself to this song, it looks like what if it would have been a physical session, we could have danced freely. Yes, and I would have liked it. Yeah. Okay, I think it is almost done now with lot many colors more and the green. Yes. So I hope that all of you are watching this doing something with basic crayons. Not many of them though, only few of them. And I hope that all of you are with us in our journey of ABT session. Uh, so as we are getting towards the end of our session, So if anyone has any question regarding yeah, arts-based therapy or what yeah, they have drawn, you can drawn just put it into the comment and you can comment ask section. a question if you feel like. Yes, yes. Please feel Also, as we were exploring Rang, what is the first color that
that comes to your mind, Vishakha, जब हम बोलते हैं रंग, तो कौन सा रंग होता है जो आपको अच्छा लगता है? I like so many colors. Picking one color is difficult, but I like blue the like, you know, when it comes to drawing as such, I go for the blue. Blue. Yeah. Okay. So I go for pink. So with the colors that we choose, let all of us keep creating the rainbow of our lives. And as we are turning into rainbow, I have a story for all of you. Vishakha, should we go with the story for our listeners? Yeah. Yes. So story ऐसी है तो English and Hindi I'll mix, and if I can Marathi as well. But story जो है वो मतलब आपको ऐसे लगेगा कि oh, is it really? So the story is about brain. Okay, so not only as such brain, but a story. So this story came up to me by my friend, who is a beautiful storyteller, and I just picked it from her, and I really liked it. So let's start with the story. So one day, as God was creating humans, he was done fitting the parts, one brain, like one head, two eyes, one nose, and two ears, two hands, two feet, and things like that. And he was almost pretty much done with the whole body. And he said, okay, now I'm done with my product, so let them go on earth and let them have their own life. So he sent people to earth, and he just tried giving them whatever he could. So once the God was done with the work, he realized, oh, he forgot to put the brains inside head. The head was empty. It had nothing. It had जैसा मराठीत बोलतात की अरे तुझ्या डोक्यात त्या कांदे बटाटे भरलेत का. So not even potatoes or onions were filled in the heads. Heads were empty. So God thought that let me think what can be done. So he called angel Gabriel, and he said कि कुछ करना पड़ेगा. अभी empty heads जाएंगे अर्थ में तो और भी issues होंगे. Yes. So the God handed over a jug to the angel Gabriel, and he told that go on earth and fill all the heads with the brain. So Gabriel angel said, yeah, I'll do it. I will obey your command. I will obey your orders. He went on to earth, and he realized that there were so many people. The earth is full of people, and he realized that he had only one jug out of it. So one jug and 100,000 people. So he said, yeah, too much to do, right? So he said that अभी वापस ऐसे खाली हाथ जाऊंगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी. ये जग का क्या करूं, ये सारे ब्रेन्स का क्या करूं? So what he did, he used a dropper, like he just tried putting one drop from the jug into every human being, right? Yeah. So imagine that he had one jug. This is one jug in which there are so many brains, but only one jug. There are many people, 100,000 people, and what Gabriel had is one drop, like each person a drop of brain. Yes. And he back reported to the God saying that yes, I'm done with the work that you asked me to do. And God just looked down on the earth and realized that people are so unhappy. People are in disparity. They are running out of money. There are a lot of issues regarding hunger, thirst. There were tears into the eyes of people, and in general, he saw that it is all over sadness. There is not even happy person on the earth. So he realized that's not done. I have made people. I have sent them on earth. They deserve a happy life. And he said, let me think over it. And what he did, he created one more person, completely different from the people that he sent on the earth. And this time, he didn't forget to put the brain inside. He put the entire one brain into one head of that person, and he sent that person on earth to make the people happy.
And the person went on earth, he kept singing, he kept dancing, he kept reading or reciting poems. He even tried having a laughter with people around, and that made a difference. So that's how the storyteller was born. And the make of this storyteller, the creation of the storyteller, after looking at the happy picture on the earth, God said, yeah, I do deserve a clap for this, because I have created a storyteller. But soon he realized that a storyteller like narrates the stories, keeps narrating the stories to everybody, and as the storyteller travels, the stories also travel. Like, for example, if I am sharing the story to all of you and to you, it is going to travel to too many people. So that's how we realized that if we use our brain to the maximum capacities, we do have brains. It's just that we just keep doing whatever we like to do. That's it. Yes. And that was a very lovely story. And I realized that, we do have brains, as you said at the end. We just need to use it properly and, very wisely. Yes. So, Radhika, before we go ahead, there's a question over here for us right now. So, I would just like to read it. Okay. So, Amresh has said us best wishes. Congratulations and best wishes. And thank you, Amresh. Okay, and there's a question for us, like from Supriya Kelkar, how does this coloring help as therapy? Okay. So to answer this question, every color has its own essence in our life. Like, for example, if we are going to shopping and we see many colors into the formats of dresses or dress materials or saris, we ought to get into the choice or option, the color that we like, the color that resembles us the most. So that is also in line with the moods, thoughts, emotions, or things that we are doing right now. We try to connect with the color. So the texture, the touches of the color on the sensory aspects, when we do it with the kids, we know the essence of it. Like for example, I still remember that few kids who come to me here, they like to shed the coloring part with their thumb. So the texture when they color, or the shedding that they do with their own hands, it gives the therapeutic aspect in the sensory perspective. Also, if we are doing or using watercolors or using acrylic colors, the activity of painting as well, the movement of the hand or the strokes, gives the relaxation and activation to many various parts in the brain, that makes us likely to go forward with the relaxing feeling. So if like I remember 2 to 3 years back, I used to have lot of headaches. So I used to use this experiment. जब मैं घर पे आती थी काम से, तो I used to just grab the coloring book and the colors, the crayons, and बस मैं वो coloring करती थी. So the coloring pattern were only relaxing patterns, which is called as relaxing patterns. पर ऐसे रियलाइज होता था that after half an hour or 15 minutes or 20 minutes maybe, I used to think that was I really having a headache? I mean, इतना पेन हो रहा था, but वो पेन गया कहाँ फिर? So the colors used to do their own magic, and for which you need to touch the colors, you need to use your colors. Even for that matter, if we are cooking and if we use lot of colors, the dish looks colorful, so the mind looks colorful. It is about resembling while doing something in our daily life, and you exploring and enjoying that resemblance of colors, I think. Yes. So as you said, when we add so many colors, as Radhika said, that it looks so beautiful. It just blows your mind. So it also happens, I've seen people like a lot of time asking me that, ma'am, are you going to analyze what I'm doing? So that's
the most questions that I have got from people, like, okay, why am I using, like, are you going to give the meaning to it? Like, if I'm using red, if I'm using green, if I'm using black. So when we do arts-based therapy, we do not interpretate what color says. Yeah. Even if you use, like, when we started with this whole activity, I guess I chose black, white, and gray because that's the three colors that I could see in front of me. Yeah. So usually people say, most of the time it is with the color black, is that, you know, if someone is using black color or dark shades, then that means the person has very dark thoughts, or there's something very negative into him, yeah, or her. Such question comes in, but it's not like that. It's just that the person is very comfortable with that color. So you can pick any color. Being an arts-based therapist, we do not judge what kind of color or shape that you have made. What we do is we work on the process, that when you were making it, how was it that you were feeling? कैसा लग रहा था आपको? कि किस तरह के thoughts आपके मन में आ रहे थे या दिमाग में चल रहे थे? And by the end of the time we completed, so कैसा लग रहा है? That's the main thing. Like, जब राधिका ने पूछा कि at the end what did I make was a circle, and then I started adding in, you know, as the song kept going. तो मैं भूल गई थी कि, you know, तीन ही colors करना है. So मुझे ऐसे लगा कि, you know, I should add something else also. And then I started picking up the colors and I started adding it. Because I had something else in my mind and I forgot about what I was drawing earlier. Like, you know, somewhere even I had that three thinking, oh, black, gray and white, मैं क्या बनाऊं? But automatically it came out, it came out, and the process in itself is important in art. That reminds me, Vishakha, 2 years back when sir asked me to paint the room, I did it with one of my friend and student. That time we were exploring, so we have literally used our hands, like we literally put our hands into the colors, acrylic colors, and we have given the thappas on the wall. And that itself, like we used to stand on the table and we used to do everything. So I think while doing that also, I was giving many hopes to people coming in that room to go through or to receive arts-based therapy, to receive its benefits, to receive the sessions from. And I think you also took your sessions into that room maximum times while you were doing your research. So I think that room has become colorful because of that. While we are coming towards the end for our session also, would you like to add your case examples that you have done? Yeah, sure, I would like to, but before that I also would like to share a few things, like as we talked about colors, similarly with drums and you know, music, there's a reason why we do it. As you talked about the tactile, when you have kids with you, they feel the touch of it, the sensory touch of it makes them feel very relaxed a lot of time. Similarly, like people, kids, or even adults who have concentration issues, or they get very easily distracted. So at times we use like drum sessions. It's not specific for them, but it's just that we could vary from different mediums to other mediums as well. Someone can use art for attention or concentration, but drums also is one of the things that we could use, or any rhythm where you know, it helps for the client to be on attention, be attentive, like what are we doing. So I remember that one of the session when I was interning with Radhika, and that time there was this lady, or no, there was a kid there was a kid, and around 17-18 years probably, and she was not able to concentrate, and you had that rainbow stick, and she was you know, we all were there, and we gave it the first, we did with that rain stick, and she was not at all comfortable with it. She wanted the djembe. And then she came on djembe, and then we just started playing whatever instrument we had, and somewhere she was not able to pick it up, but slowly and steadily, as you started giving her beats, she was able to be, you know, pay attention where you're leading her, or you know, she was able to add into it, like, okay, this is how let's do, this is how that.
you know, she was just adding into it, and she was also trying to do what you were trying to do. So basically all these things are helped in such a way, the session is made in a such a way, so whatever is our goal is to attain, we focus on that. And as I said, that the process is important rather than what we are doing and how we are doing. A client can just beat only one beat and, you know, can move in only one, like a child or an adult would be very fine to just do like this when they're moving. Actually they keep like this. I mean our trainer and our teacher and my guide used to ask me, एक ही करती रहेगी तो और उसका मीनिंग ढूंढती रहेगी तो कुछ नहीं मिलेगा तुझे. You just need to go with the flow of playing whatever comes to your mind, and letting the client free to use 2 hands, 1 djembe, or 2 hands, 1 instrument, 2 sticks. I still give the pulse with the sticks even right now in sessions whenever I do drum circle with one-on-one basis. So I think ये जब हम करते हैं तो ऐसे लगता है कि हाँ यहाँ पे कुछ motivation है to start a session. We are going to see something change, some slight subtle change at the end of the session, what was there previously and which is not there at the end of the session. I think that is a motivation that keeps us going even in the pandemic, and even in the online sessions we have tried taking on arts based therapy, right? True. तो जैसे हम end पे आ रहे हैं तो would you like to give one case example जो आपने किया हो और जो आपने enjoy किया हो, maybe for our listeners in Hindi if we can try. Okay, definitely I'll talk in Hindi. So I have so many case examples, but one specific, like जब मैं मेरा research project कर रही थी, you know, it was very new to me, and art in itself was very new to me. So I myself had so many doubts whether मैं बराबर कर रही हूँ या नहीं. So the first session that I had, so I'm just going to give an overall idea about not one specific case, but my overall how was that journey. So I had different population. मैंने clinical setup में किया था जहाँ पे different populations थे, but of a same age group, like adult age group. So someone had anxiety, someone had something else, OCD, or someone was having something else, kind of a disorder. So initially it was for me when मैंने first session किया था, तो would, like, you know, when they created whatever I asked them to create, so I felt like okay, creation तो हो गया है, and जैसे जैसे आगे बढ़ते गए, I, you know, by the end of the research project last session, I wasn't sure actually is there any difference or not. I before conducting my last session, like we do a pre-test and a post-test. So in that post-test, I remember I was so nervous, Radhika, मैं बहुत ज़्यादा nervous थी. But जब I did the post-test, it was amazing. I can't even tell. Like some had very few changes, some had very drastic changes. In that few changes, I would like to say that I had one client जिसके पास जिसने starting में बोलते हैं सिर्फ सर्कल का एक बीच का हिस्सा कलर किया था. Okay. और एंड में उसने पूरा सर्कल कलर किया था, उसने फ्लावर्स बनाए थे, उसने हार्डली 1-2 ऐसे लाइंस वगैरह, यू नो, कोई सिंबल्स बनाए थे. तो वो देख के कि ओके स्टार्टिंग में ये था, एंड में ये है, आई वाज लाइक so amazing. I was so thrilled कि this is what the changes. Yes. जहाँ हमें explicitly नहीं दिखाई देता कि changes, you know, हो रहा है या कितना हो रहा है, मगर internally बहुत सारे changes होते हैं. And I could also see, मतलब मैं देख सकती थी कि वो कितनी calm down हो गई है. मतलब जिस लेवल पे उनका एंजाइटी या थोड़ा बहुत चिड़चिड़नेस या इरिटेशन था, वो काफी काम डाउन हो गया है. तो इन उस तरह से आई कुड से कि मेरा जो रिसर्च जर्नी था, दैट्स द बेस्ट पार्ट, बिकॉज द पोस्ट वाज अमेजिंग. आई कैन इवन से yeah. yes. So
yeah, that's how I would like to share at the end ki that's how it works. So sometimes even I mean client को भी शायद idea नहीं होता है कि हम ये करें. Even with that one more just short case I would like to share that I had a client जिसके साथ मैंने she had an anxiety issue, proper anxiety issue, and she had created a face at the initial time, and after 9-10 session or yeah approximately 9-10 session she I made her create a face again and बहुत changes था. Once there was a phase where she didn't knew, you know, she was not ready to name that character. She said that you know that character looks so troubled, she's dead, she's tired, she has so many negative thoughts, she doesn't know that character ki usko kya chahiye life mein. Whereas the second time she drew it at like after 10 sessions, it was like the character automatically went into a happy zone. The character knew where the character has to go, the character had a name. Yes. And she herself was happy seeing that character and you know talking about that. So she talked about that character by herself. Like initially जो उसको बोलना पड़ रहा था कि okay what is this and how does she feel, and she was like कि नहीं कुछ नहीं हो रहा है, and then she that reminds me, I had a few clients suffering from depression. One of the client was not really talkative, Vishakha. जब वो आती थी patient मतलब clinic में मेरे साथ बात करने के लिए, तो उतना ज्यादा explorative नहीं था. But I still remember I started with basic omkar and pranayam and just bit of meditation to settle down, to be comfortable. And the moment she left her inhibitions away, as we keep saying ना कि हम trainers भी हमारे बात करते थे, तुम्हारे खुद के अंदर जो तुमको रोक के रखता है उसको छोड़ो. Like your body is not a cage to be in it. You need to be free. The moment you are free, you can explore yourself in much more beautiful way. So I think मेरे उसके साथ बहुत सारे sessions dance movement and exploring the same room पे हुए. We used to do that strips के papers and then dance और बेसिक रिदम. बट रिदम से अच्छा मैंने अभी तक जो भी डिप्रेशन के केसेस देखे हैं यहाँ पे, एंड इवन विद द किड्स दैट आई वाज कैटरिंग टू, जब मैं मेरा एक्शन रिसर्च प्रोजेक्ट कर रही थी, तो ऐसे होता है दैट मूवमेंट बेसिकली, हम जब डिप्रेशन बोलते हैं तो सिम्टम्स जैसे होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस एंड लैक ऑफ मोटिवेशन इज अ प्राइमरी सिम्टम दैट वी टैप. Yes. So whenever there is a lack of motivation, it is going to be, the person is going to be in need of motivation. उसको प्रोत्साहन हवं असतं त्याला काहीतरी करण्यासाठी. Why do I need to wake up? So जैसे हम वो existential therapy को connect करते हैं, that you exist for some reason, find out that reason, find the meaning in your life. तो ये मीनिंग उनको ढूंढने के लिए उनका मूवमेंट, उनका जहाँ जो प्लेस में वो बैठे हैं वो प्लेस एक्सप्लोर करना, उसमें मूवमेंट करना, उसमें स्मॉल पेंटिंग एक्टिविटी लाइक इमेजिनेटिव पेंटिंग एक्टिविटी लेना, कीप्स देयर बॉडी लिटरली फ्री. इट हेल्प्स देम टू बी इनहिबिशन फ्री. जे तुम्हाला रोखून धरतंय, जे तुम्हाला बांधून ठेवतंय, ते मुक्त कराते सोडा, एंड यू विल बी रियली वेरी हैप्पी व्हाइल डूइंग इट. स्लोली उनके चेंजेस दिखाई दिए. आज वो अच्छे से बात करती है, वो खुश है, वो खुश रहने की कोशिश करती है, इनिशिएटिव लेना भी बहुत कुछ इम्प्रूवमेंट हुआ है. सो आई थिंक दीज आर द चेंजेस that happens when it comes to dealing and treating with anxiety and depression patients. Also common population जहाँ पे हम देखते हैं विशाखा की स्ट्रेस इज द बेसिक टेनेट ऑफ लाइफ. तो ये स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए, स्ट्रेस रिलीज करने के लिए ऐसे एक्टिविटीज जैसे कि ड्रम सर्कल है, विजुअल आर्ट्स है, स्टोरी है, विच इज द स्टोरी दैट आई नरेटेड. इट वाज जस्ट स्मॉल, आई मीन इट डजंट हैव अ बिग थिंग, but you realize that be a storyteller. Don't control your emotions, don't hold back your stories, don't hold back your songs, your dance, your art. Because your art मैं मुझे ये भी यहाँ पे बोलना है थ्रू दिस सेशन विशाखा कि हम सब में एक आर्ट है, एक कला असते आपल्यात. इट्स जस्ट दैट हमें नहीं पता कि वो कौन सी है, शायद क्योंकि हम अवेयर नहीं हैं. और हम पता भी करते हैं कि हमें ये आता है या हम कर सकते हैं, तो भी शायद कहीं ना कहीं उसको कम इम्पोर्टेंस देना
देना हॅबिट होत आहे, हमारी सवय लागते ती की नाही हे आता नाही करायचंय, आता जॉब करायचंय, किंवा नाही हे आता नहीं करायचंय, आता समोर काहीतरी काम आहे. अगर हम ये करते रहेंगे तो हमारी आर्ट हमें छोड़ के जाने के चांसेस होते हैं, बिकॉज वी आर नॉट लॉन्गर इन प्रैक्टिस, वी नो लॉन्गर प्रैक्टिस दैट. तो जब हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब हम आर्ट एक्सप्लोर ही नहीं करेंगे, तो हमारे आर्ट लाइक जो कला होती है, जी कला से जो आर्ट होती है वो एक्सप्लोर, वो बढ़ेगी नहीं. और अगर हम चाहते हैं कि ये और एक्सप्लोर हो, वो और बढ़े, तो वो करते रहना, उसकी प्रैक्टिस करते रहना और उसको महसूस करना, ये हमारी जिम्मेदारी है. बिकॉज योर आर्ट, विच एवर आर्ट दैट यू डू, makes your soul and body and mind happy. Yeah. So keep dancing, keep singing, keep narrating stories, keep writing, keep keep doing whatever makes you happy. Your happiness is in your hands, nothing else is. So I guess here we would like to conclude हमारा सेशन यहाँ कंक्लूड करना पसंद करेंगे. अगर किसी को भी कोई डाउट्स है अबाउट आर्ट बेस्ड थेरेपी या अबाउट उनने जो क्रिएट किया है आज हमारे साथ सेशन के अंदर, ये भी फेसबुक पे अपलोड किया जाएगा. सो यू कैन पुट दैट इन द कमेंट एंड हम आपको उसके ऊपर रिप्लाई देना पसंद करेंगे. Yeah. So it will again be uploaded on Manas Psychological Health Center Facebook page, and even I think Insta handle as well. Yeah. So again, me and Vishakha wish Manas Psychological Health Center for completing and continuing the legacy of 20 years and entering into the 21st years. So I am glad that I joined Manas when Manas was in teens, and now it is entering into the adulthood of its life. So again, wishes and lot of good things that we can give it for our patients, Vishakha. And also to look your journey as practitioner was as amazing as it was mine. So we have enjoyed. So hope हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारा सेशन पसंद करेंगे और हमें कमेंट्स देंगे और हमें उनका क्रिएटिव आर्ट मटेरियल जो भी उन्होंने एक्सप्लोर किया है और वो जो भी किया है उसके फोटोज भेजेंगे. Yes. Thank you so much. Thank you all. Thank you. Bye. Have a lovely weekend.